कुछ लोग और ज्वाइन कर रहे हैं अभी थोड़ी देर में। बस बंद कर दे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। With this week, from this week we are starting our design thinking journey। और आप सब स्टार्टअप्स के लिए जो यहाँ पे मौजूद हैं, जो डिजिटली हमें ज्वाइन कर रहे हैं, this next 5 week journey is super important। और इससे पहले मैं चाह रहा था आपको एक थोड़ी सी क्विक ब्रीफिंग दे दूं कि ओवरऑल प्रोग्राम के अंदर हमारी एक्सपेक्टेशन क्या है, प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है। हमने लीडरशिप से शुरू तो किया, लेकिन हम करिकुलम पूरा का पूरा आपसे एक ओवरव्यू आज डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपको पूरी जर्नी की क्लैरिटी हो कि पूरा जो 1 साल की जर्नी में हम आपके साथ क्या कर रहे होंगे, क्या प्रोग्राम की एक्सपेक्टेशंस है और व्हाट यू विल गेट आउट ऑफ दिस। 1 साल की जर्नी हमारे साथ ट्रैवल करने में आपको क्या फ़ायदा है। देखिए यहाँ पे एक चीज़ मैं बड़ा क्लियर समझा दूँ कि ये क्लासरूम नहीं है, एक टिपिकल क्लासरूम नहीं है। इस जर्नी का पर्पज़ ये है कि आप लोगों को बेनिफिट पहुँचे। हमारा सिंगुलर पर्पज़ जो है दैट इज़ टू हेल्प यू इन योर बिजनेसेस। हमें पढ़ाने से ज़्यादा आपको सिखाने में दिलचस्पी है, और सिखाने से भी ज़्यादा उस सीखे हुए की इम्प्लीमेंटेशन में दिलचस्पी है, और उससे भी ज़्यादा उस इम्प्लीमेंटेशन के टैंजिबल रिजल्ट्स निकलने चाहिए। यहाँ ग्रेडिंग नहीं है, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ रिपोर्टिंग वो हर चीज़ लिखी जा रही है कि जी अटेंडेंस कितनी है, पार्टिसिपेशन कितनी है, बट दैट इज़ नॉट द पर्पस। द पर्पस रियली इज़ 3 चीज़ें। आप कितने पैसे बना रहे हैं, आप कितनी जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, और आप कितनी इन्वेस्टमेंट रेस कर रहे हैं। हम एक्चुअली ये 3 चीज़ें आपसे अचीव करवाना चाहते हैं। इसके लिए हम आपको पुश करेंगे। ये जो इतना हम आपको रमज़ान के अंदर भी तंग कर रहे हैं और पूरा 1 साल तंग करते रहेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। उसका सिंगुलर पर्पस ये है। ये स्टार्टअप गाइड कल हमने आपसे शेयर कर दिया। सो अगर मैं उसमें क्विकली और फोकस करूं तो ये 3 चीजें हम आपसे अचीव करवाना चाहते हैं। ये आपने अचीव करनी है। ईच स्टार्टअप इज डिफरेंट, और आप सबकी जर्नी भी डिफरेंट होगी थोड़ी सी, और आप सबके लिए ये मैट्रिक्स भी स्लाइटली वेरी करेंगे। कोई B2B स्टार्टअप होगा, कोई B2C होगा, तो उसके नंबर्स भी वेरी करेंगे। लेकिन आपका जो फोकस होगा ना इस पूरी एक जर्नी में होना चाहिए, दैट इज दीज 3 थिंग्स। ट्रैक्शन, कितने कस्टमर हैं आपके पास, कितने पेइंग कस्टमर्स हैं आपके पास। सेकंड, कितनी जॉब्स आप क्रिएट कर रहे हैं, आपके स्टार्टअप ने कितनी जॉब्स क्रिएट कर दी हैं। एंड थर्ड, आइडियली यू शुड बिकम इन्वेस्टेबल, और आप इन्वेस्टमेंट रेस करें। कोई स्टार्टअप हो सकता है उसका रेवेन्यू बहुत अच्छा और उसको इन्वेस्टमेंट रेस करने की जरूरत ही ना हो, दैट्स फेयरली योर कॉल। हम आपको पुश नहीं करेंगे कि आपका रेवेन्यू बहुत अच्छा है उसके बावजूद आप इन्वेस्टमेंट रेस करें। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट रेस करना चाह रहे हो तो दैट्स आवर जॉब देन, कि हम आपको हेल्प करें कि इन्वेस्टमेंट रेडीनेस के जो चेक लिस्ट है ना वो सारे आप पूरे कर रहे हो, ताकि इन्वेस्टर विलिंग हो आपके स्टार्टअप के अंदर पैसे डालने के लिए। इसमें सिंक है, सहमत है? वी आर ऑन सेम पेज फॉर दिस, गुड। बाकी सारी कहानी है यार, कोई इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है। कितने स्टार्टअप आएंगे यहाँ पे ये आपका कंसर्न नहीं है, ये हमारा कंसर्न है। फॉर यू, योर स्टार्टअप इज इंपॉर्टेंट, ईच वन ऑफ यू इंडिविजुअली। टोटल 50 आएंगे, आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको फ़र्क इन 3 चीज़ों से पड़ेगा सिर्फ। ट्रैक्शन, जॉब्स क्रिएटेड, इन्वेस्टमेंट रेस्ड। इस पे रिलीजियसली हमने काम करना है। ये थोड़ी सी मैं कहानी आपको सुना देता हूँ, प्रीएम्बल बिल्ड कर दूँ, व्हाई वी आर टुगेदर, व्हाट दिस सेंटर इज। कि पाकिस्तान में बहुत बड़ी मार्केट अपॉर्चुनिटी है और बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस हैं। देखिए आपके पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन एट होम है। अब तो हम ऑलमोस्ट 230 मिलियन हो गए, स्लाइड थोड़ी सी पुरानी है, लेकिन रैंक हमारा अभी भी 5th है, दुनिया में 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। कैन यू जस्ट इमेजिन कि 5th लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड।
कितनी बड़ी पॉपुलेशन आपकी नेक्स्ट डोर मार्केट है, राइट? सो रियलाइज दिस। फिर उसके बाद वर्क फोर्स, एक्सपोर्ट्स में अभी बड़ा गैप है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ा हम काम कर सकते हैं। सो लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में बिजनेस बनाना बहुत मुश्किल है। ये आपको इसलिए नहीं बता रहे कि आप डर जाएं और आज बंद करके स्टार्टअप घर चले जाएं, ये इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप ये क्रैक कर लेंगे तो यू हैव बिगर रिवॉर्ड्स। और ये सेंटर, नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज और ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है नेस्ट है, इनका हमारी जॉब है, इट्स आवर मैंडेट, इट्स आवर पर्पस कि आपको हेल्प करें कि आप ये सारी चीजें क्रॉस करें, ये सारे बैरियर्स क्रॉस करें और उस जो बिगर रिवॉर्ड्स हैं वो एंजॉय कर सकें। इसमें से एक ही बिट ऑफ इंफॉर्मेशन याद रखें कि 100 बिलियन से ज्यादा स्मार्टफोन हो गए। अगर आप डिजिटल कंपनी है तो स्केलिंग इज सुपर इजी इन पाकिस्तान नाउ। दिस इज द बेस्ट टाइम टू बी ए स्टार्टअप इन पाकिस्तान। और फिर हमारी कंज्यूमर स्पेंडिंग अगर आप देखें ना, $200 बिलियन से ज्यादा की पाकिस्तान की कंज्यूमर स्पेंडिंग है। सो इफ यू आर सॉल्विंग ए पेन पॉइंट, you have a massive market. So ideally every startup should be focusing on solving pain points. आप में से कितने लोग, हम में से कितने लोग मेडिकल स्टोर पे पेन किलर्स खरीदने जाते हैं और कितने लोग विटामिन्स खरीदने जाते हैं? मेजॉरिटी क्या खरीदने जाता है? पेन किलर्स, विटामिन्स, अंटिल अनलेस के डॉक्टर लिख ना दे कि नहीं भाई साहब, नहीं बाजी, अब आपका गुजारा ही नहीं है विटामिन के बगैर, तो हम क्या जाते हैं विटामिन्स खरीदने? खुद से कितनी दफा हम विटामिन्स खरीदने जाते हैं और पैनाडोल खरीदने कितनी दफा गए? सो आप, ये आपके लिए बिजनेस लेसन भी है कि आपका जो स्टार्टअप है ना वो कोई पेन सॉल्व कर रहा हो, वो पेन किलर हो, वो किसी प्रॉब्लम को किल कर रहा हो, किसी की पेन सॉल्व कर रहा हो, फिर उसके लिए आपको पुश नहीं करना पड़ेगा, कस्टमर पुल हो रहा होगा। स्टार्टअप इकोसिस्टम कैसे बनता है ये फिर ग्रेजुअली हम बिल्ड करेंगे इस डिस्कशन को, आज ही सारी चीजें पढ़ानी नहीं है। स्टार्टअप इकोसिस्टम, हाँ, ये सारी NICs पूरा एक नेटवर्क बन चुका है। NICs, दिस इज द 8th NIC इन पाकिस्तान, देयर आर मोर इन पाइपलाइन। सो इग्नाइट मिनिस्ट्री ऑफ IT की तरफ से ये फंडेड है। तो यू हैव दिस एडवांटेज कि अगर आपके पास ये 8 शहरों में ये नेटवर्क एग्जिस्ट कर रहा है, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कोयटा, पेशावर, हैदराबाद, फैसलाबाद एंड पिंडी, सो आप कोई भी यहाँ से हेल्प लेना चाहें दूसरे सिटीज से, तो थ्रू द नेटवर्क ऑफ NICs वी कैन हेल्प यू। सो ये पार्ट ऑफ ए कम्युनिटी जो कि अक्रॉस पाकिस्तान मौजूद है, आपको ये एडवांटेज है। सो थिंक लाइक दैट, आप नेटवर्क के फॉर्म में सोचें, एक सिस्टम लेवल पे सोचें कि वहाँ से आपको क्या हेल्प चाहिए। वो कोई मेंटोर हो सकता है, कोई पार्टनर हो सकता है, कोई कस्टमर हो सकता है। जस्ट थिंक ऑफ दैट। और वो what we want to hear from you on a daily basis, especially मैं, वो आपके problems हैं। Don't be shy of sharing your problems with us, वो फौरन शेयर करें। That's what our purpose is, कि आपके problems solve करें। आप हर दिन अपने problems हमारे पास लेके आएं कि मुझे ये पार्टनर चाहिए, ये कस्टमर पोटेंशियल चाहिए, ये कोई मेंटोर चाहिए, मुझे ये कोई रॉ मटेरियल चाहिए, थिंग्स लाइक दैट। आपको कोई किसी से पार्टनरशिप करनी है, कोई कोलैबोरेशन बनानी है, दैट्स व्हाट आवर पर्पस इज। फिर इग्नाइट की वजह से, थैंक्स टू इग्नाइट, एक बहुत बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम पाकिस्तान में बिल्ड हो रहा है, मर्ज हो रहा है, जिसमें स्टार्टअप्स ऑलरेडी कोई $800 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पिछले 3-4 सालों में पाकिस्तानी स्टार्टअप्स ने रेज किए हैं। दैट्स अ कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। पाकिस्तान के GDP $300 बिलियन है, दिस इज क्लोज टू $1 बिलियन इन्वेस्टमेंट। जस्ट इमेजिन कि ये इसी स्पीड से अगर ग्रो करता है तो दिस विल हैव एन इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान इकोनॉमी, नेशनल लेवल की कंट्रीब्यूशन बनती है। देन ये कुछ स्टार्टअप्स हैं, ये आप बाद में देख लेंगे ऑफलाइन इनको जाके। मोटे हमारा जो पर्पस है कि इंक्यूबेशन सेंटर का जो पर्पस होता है ना, वो ये है टू क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेयर अदर्स कैन सक्सीड, एंड फॉर अस वो अदर्स आप हैं, ये स्टार्टअप सारे हमारा सिंगुलर पर्पस है कि हम एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट आपको क्रिएट करके दें जिसमें आप सक्सेसफुल हों,
आपकी सक्सेस हमारी सक्सेस है, हमारी आइसोलेशन में कोई सक्सेस है ही नहीं। ऑल वी वांट इज कि यू पीपल बिकम सक्सेसफुल कंपनीज, और आपकी सक्सेस को हम सेलिब्रेट करें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं, ऑफलाइन आप इनको पढ़ सकते हैं, बट ये चीज़ मैं री एम्फोसिस करना चाहता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये हर स्टार्टअप को ना अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना चाहिए। दिस इज वी एज एन इंक्यूबेशन सेंटर विल बी डूइंग विद यू, कि जिस तरह एक मशीन के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, कंप्यूटर के ऊपर, इट कैन बी विंडोज, इट कैन बी मैक, और कोई लिनक्स हो सकता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बगैर वो हार्डवेयर रन नहीं होता। So similar, every company, every startup needs to have an operating system. कुछ rules define करें जिस पे वो startup run होगा, right? Set of rules to run an organization is called operating system. ये एक हम आपको टेम्पलेट दे रहे हैं, इसी तरह का आपने भी बनाना है, हर स्टार्टअप ने अपने लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना है। उसकी रीजन ये है कि कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन आप देखेंगे ना, वहां प्रोसेसेस होंगे, वो प्रोसेसेस की वजह से स्केल कर पाते हैं। The number one reason startups scaling नहीं स्केल लेवल पे आके फेल होते हैं, because they don't have processes. वो शुरू से प्रोसेस सोचते ही नहीं है, क्योंकि वो छोटी टीम होती है, एज इंडिविजुअल्स काम कर रहे होते हैं, सडनली स्टार्टअप जो ग्रो करना शुरू कर देता है और वो माइंडसेट ग्रोथ नहीं हो रहा। उसके लिए जरूरी है कि आप प्रोसेसेस बनाएं, ये प्रोसेसेस आपकी ग्रोथ इनेबल करेंगे, और उस पर अपनी वैल्यूज डिफाइन करें, हु यू आर, व्हाट यू स्टैंड फॉर। हम्बल, दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग आप देखेंगे, सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, द कॉन्फिडेंट ह्यूमिलिटी इज नंबर वन ट्रेट दे हैव, एंड दिस इज व्हाट इन्वेस्टर्स लुक फॉर एज वेल, कि यू आर सुपर कॉन्फिडेंट येट यू शुड बी हम्बल। यू आर जस्ट वन ऑफ द 7 बिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ। फिर हम एज ए नाइकेट हम ये चाहते हैं कि क्रिएटिव और एजाइल, मतलब यू शुड बी क्रिएटिव बट यू शुड बी एजाइल, मेक फास्ट प्रोग्रेस, ये बड़ा ज़रूरी है इन अ फास्ट मूविंग वर्ल्ड जहाँ पे एजिलिटी बहुत ज़रूरी है। इन्वेस्टमेंट वैल्यू चेन बिल्ड करना इज आवर जॉब, वी आर वर्किंग ऑन दैट। टर्म 1 जो होगी, आप हमारे साथ जो 1 साल की जर्नी है आपकी, दैट स्प्लिट इनटू 2 टर्म्स, टर्म 1 एंड देन टर्म 2। टर्म 1 के अंदर हमारा फोकस है कि आप प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव करें। मैं आगे आपको डिटेल में बताता हूं पूरा एक इनोवेशन फ्रेमवर्क, जिसमें 3 स्टेजेस होते हैं, प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट, प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड देन बिजनेस मॉडल फिट। एंड आई रिपीट, प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट नंबर 1 स्टेज ये है कि आपने एक राइट प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया और उस राइट प्रॉब्लम के अगेंस्ट एक राइट सोल्यूशन भी डिजाइन कर लिया, दिस इज प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट। देन प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि आपकी प्रोडक्ट आपने कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स बना लिए और कस्टमर आ गए, पेइंग कस्टमर्स आ गए, कुछ ट्रैक्शन जनरेट हो गई है, दिस इज प्रोडक्ट मार्केट फिट। एंड देन इज बिजनेस मॉडल फिट, करीम और ऊबर आज स्केल कर चुके हैं, वो बिजनेस मॉडल फिट स्टेज अचीव कर चुके हैं। सो हर स्टार्टअप जो है ना, वो इस जर्नी इन 3 स्टेजेस के ऊपर अपने आप को मैप करेगा। हम एक्टिवली इसको ट्रैक कर रहे होंगे, आपके साथ इसी पे काम कर रहे होंगे, और हमारी कोशिश ये है कि हम आपको जल्द से जल्द 1 साल के अंदर आइडियली बिजनेस मॉडल फिट पे लेके जाएं, और टर्म 1 के अंदर प्रोडक्ट मार्केट फिट अचीव करवाएं आपसे, आपको असिस्ट करें, आपको हेल्प करें दैट यू अचीव प्रोडक्ट मार्केट फिट इन टर्म 1 6 मंथ्स के अंदर। और इन 5 वीक्स के अंदर जो डिजाइन थिंकिंग के 5 वीक्स हैं, इनके अंदर प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट आपने अचीव करना है। बाय अचीविंग डजंट मीन कि आपका स्टार्टअप एक्चुअली प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट बना ले, बट आप वो मेथोडोलॉजी समझ लें और उसको एटलीस्ट 1 टाइम अपने स्टार्टअप पे अप्लाई कर लें। आपने वो प्रोसेस सीख लिया, मेथोडोलॉजी सीख ली, तो फिर देन यू आर गुड। वो हमारा जॉब ये है कि हम आपको प्रोसेस इंट्रोड्यूस कर दें, प्रोसेस आपको आता हो, वो टूल सेट आपके पास हो, देन इट्स योर जॉब कि आप अपने स्टार्टअप पे उसको अप्लाई करें। सो प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट, प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड बिजनेस मॉडल फिट, ये हमारी कॉमन लैंग्वेज होगी। हम जब भी बात कर रहे होंगे, इसको ना जल्द से जल्द एब्जॉर्ब कर लें, समझ लें, पढ़ लें, डिटेल में पढ़ें और एब्जॉर्ब कर लें, ये हमारी कॉमन लैंग्वेज होगी। जब मैं और आप बात कर रहे होंगे तो आप मुझे बताएंगे कि आप किस स्टेज पे स्टक हैं एंड व्हाट्स योर चैलेंज नेक्स्ट, अगला चैलेंज क्या है, उसको हम आपको हेल्प करें ब्रेक करने के लिए। दिस इज टीम, आप अभी तक फेमिलियर हो चुके हैं। हाँ, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट नाउ कि जो इंक्यूबेशन प्रोग्राम है, जो हमने आपको तंग करना है 1 साल के लिए, और आपने हमें
दिस इज टू पार्ट्स कि जो इंक्यूबेशन प्रोग्राम है उसमें वन इज इनोवेशन फ्रेमवर्क एंड अनदर इज इनोवेटर डीएनए। दोनों चीज़ों को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर, सुपर इजी, बहुत आसान से दो कॉन्सेप्ट है। नंबर वन इनोवेशन फ्रेमवर्क है। अगर वो आप ऊपर देखें, देयर आर 3 स्टेजेस: प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट, प्रोडक्ट मार्केट फिट और बिजनेस मॉडल फिट। जब आप स्टार्टअप जर्नी शुरू करते हैं तो इट्स प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट स्टेज पे होते हैं, और वो डिजाइन थिंकिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टूल्स टू सॉल्व ए प्रॉब्लम, ए कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट अचीव करने का वन ऑफ द बेस्ट टूल्स इज डिजाइन थिंकिंग। इसलिए हम 5 हफ्ते पूरे स्पेंड कर रहे होंगे डिजाइन थिंकिंग पे। Mariam Khan is your trainer for design thinking. Mariam has a good career with JS Bank. उसके अलावा स्टार्टअप्स के साथ काम कर रही हैं, इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ काम करें। So she has a vast experience in design thinking. So Mariam लीड करेगी डिजाइन थिंकिंग के पूरे 5 वीक्स, और ये बड़ी हैंड्स ऑन एक्सरसाइज होगी। जिसे हम पढ़ा भी रहे होंगे आपको, रादर आपको सिखा रहे होंगे, और आप वो सारी की सारी जो मेथोडोलॉजीज है, टूल्स है, वो अपने स्टार्टअप्स पे अप्लाई कर रहे होंगे। सो हैंड्स ऑन लर्निंग होगी आपकी, और आप देखेंगे कि आपके स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल इवॉल्व हो रहा है इन 5 वीक्स की जर्नी में। उसके बाद इसके लिए डिजाइन थिंकिंग टूल है, और उसके बाद आता है प्रोडक्ट मार्केट फिट। जब आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट से निकल के प्रोडक्ट मार्केट फिट पे जा रहे होते हैं, तो वहां पे 2 लीन स्टार्टअप और एजाइल, ये 2 चीजें आप प्राइमरीली यूज करते हैं। ये भी हम इनसे भी घबराना नहीं, बहुत आसान से कॉन्सेप्ट है, हम वहां पहुंचेंगे तो आपको डिटेल में घबराना नहीं आपको। और उसके बाद फिर आ जाता है स्केलिंग, द रियल चैलेंज। स्केलिंग पे इज कि आप फ्यू 100 यूनिट्स बेचें, 1000 यूनिट्स बेचें, और उससे भी ज्यादा, और बिजनेस मॉडल फिट कि मार्केट में एक वाइडर एक्सेप्टेबिलिटी बिल्ड हो जाए आपकी प्रोडक्ट। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं इस क्लिकर की, एज ए प्रोडक्ट हम ये क्लिकर डिजाइन करना चाह रहे हैं। सो इस क्लिकर का डिजाइन क्या होगा और किसके लिए होगा? मोर इंपॉर्टेंट है कि क्लिकर किसके लिए डिजाइन करना चाह रहे हैं। दैट इज द फंडामेंटल क्वेश्चन। आपका स्टार्टअप का सबसे पहला क्वेश्चन ये होना चाहिए, फॉर होम, किसके लिए प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं। कस्टमर सबसे पहले ढूंढे, उस कस्टमर को समझे, उस कस्टमर के साथ एम्पैथाइज करें, तो फिर वही बॉडी करके आपकी सबमिट करेगी इसको, उसके लिए एक प्रोडक्ट डिजाइन करें। ये जो प्रोसेस है, दिस इज प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट, और ये डिजाइन थिंकिंग के थ्रू आप करेंगे। उसके बाद वंस वी हैव डिजाइन्ड इट, एक प्रोटोटाइप बन गया है, अप्रॉक्सीमेट शेप बन गई है, अब हम एक्चुअली कस्टमर के पास लेके जाते हैं और उसे ये कहते हैं कि मैं ये प्रोडक्ट बना रहा हूँ, 1000 रुपये में आप मेरे से बाय करने के लिए तैयार है, और वो एक्चुअली बाय कर रहे हैं, या इन सम केसेस विलिंगनेस टू बाय करना है। इस प्रोडक्ट का डेवलपमेंट टाइम साइकिल लंबा होता है, ज़्यादा टाइम लगता है उसको बनाने में। सो वो विलिंगनेस टू बाय कर देता है कस्टमर, यहाँ ये करा के लाएंगे, उसके लिए ये पिक्चर दोगे, आप बाय। That's sure that that's the success of design thinking process. और ये प्रॉब्लम सॉल्यूशन फिट है, और प्रोडक्ट मार्केट फिट में एक्चुअली वो बाय करना शुरू कर देते हैं आपसे। आप कुछ नंबर ऑफ यूनिट्स बना के बेचना शुरू कर देते हैं। That's प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि मार्केट में आपकी प्रोडक्ट की एपेटाइट है, और फिर आप सम यूनिट से 100 and 1000 यूनिट्स की तरफ जब जाते हैं, that's scale। अब ये जर्नी जो है, जब आप ट्रैवल कर रहे हैं, इट्स अ डिफिकल्ट जर्नी, उसके लिए जरूरी है कि यू ग्रो एज अ लीडर एज वेल। ईच वन ऑफ यू, एवरी सिंगल मेंबर ऑफ योर स्टार्टअप नीड्स टू ग्रो एट अ फास्टर पेस देन योर बिजनेस। रियलाइज दिस, you are the first product of your startup, so you need to work on yourself as well, and you need to grow faster than your business. Otherwise, you will not be able to handle that growth. जो Uber का पहला CEO था, who got fired, that's an example. That you need to grow इतनी बड़ी कंपनी, और जो कि उसने बनाई, ग्रो की, and then
करना है, कॉम्पिटेंसीज और करेक्टर क्वालिटीज। जनरली इंक्यूबेशन सेंटर्स में ये नहीं बताया जाता, ये इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता, बट वी बिलीव कि आप एज ए लीडर ग्रो करेंगे तो यू विल एबल टू ग्रो योर कंपनी, योर बिजनेस बेटर इन अ बेटर वे। इसलिए हम कॉन्शियसली आपके साथ इस पे भी काम कर रहे होंगे। सो पूरे एक साल में दिस इज व्हाट वी वांट टू डू विद यू। ये वही इनोवेशन फ्रेमवर्क बट उसका एक एक्सपेंडेड व्यू है। द स्टार्टअप्स के अंदर नंबर वन प्रॉब्लम क्या होता है, आप में से कितने लोग वीकली अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर रहे हैं? गुड जॉब, दिस इज सुपर इंपॉर्टेंट। आप जो स्टार्टअप के अंदर क्या होता है कि यू डोंट हैव अ बॉस एंड दैट्स अ ट्रेजेडी कि यू आर नॉट अकाउंटेबल। अब आप किसी को चूंकि डायरेक्टली रिपोर्ट नहीं कर रहे, जो को फाउंडर्स हैं, तो वो क्या होता है कि ओपन एंडेड काम करना शुरू कर देते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक ही नहीं कर रहे होते, केपीआईज नहीं होते। एक कॉर्पोरेट के अंदर केपीआईज होते हैं, ठीक है। किसी भी कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आप जाएंगे तो दे गिव यू टारगेट्स कि इस वीक का ये टारगेट है, नेक्स्ट मंथ का ये टारगेट है। सो यू ट्राई टू हिट दोज टारगेट्स वीकली, मंथली, एनुअली। बट इन स्टार्टअप यू नीड टू सेट दोज टारगेट्स फॉर योरसेल्फ। अगर वो आप टारगेट्स ही सेट नहीं कर रहे तो आप ग्रोथ कैसे अपनी मेजर कर रहे हैं? यू मेकिंग प्रोग्रेस, ये आप कैसे मेजर कर रहे हैं अगर आपके गोल्स ही नहीं है, आपके टारगेट्स ही नहीं है? तो इसको हम कहते हैं केपीआई ड्रिवन ग्रोथ। यहां पे हम आपको हर स्टेज ऑफ योर स्टार्टअप केपीआईज देंगे। वो वेरी करे, उस केपीआई का नंबर वेरी करेगा स्टार्टअप टू स्टार्टअप, बट वो जनरली केपीआईज वही होंगे सबके लिए। Because you need to set targets for yourself and then you need to measure your performance against those KPIs. तभी आप प्रोग्रेस बना रहे हैं, अदरवाइज आप प्रोग्रेस ही नहीं करेंगे, सुस्त हो जाएंगे, लेजी हो जाएंगे, ट्रैक लूज कर देंगे। देयर कैन बी मल्टीपल रीजंस, और यही रीजन है स्टार्टअप्स के फेल होने का। हमारी कोशिश ये है कि हर वो पोटेंशियली पाथ जो फेलियर को लीड करता है उससे अवॉइड करवाएं आपको। मेरे पास ऑनेस्टली कोई सक्सेस का गारंटीड फॉर्मूला नहीं है, बट आई डू हैव अ फॉर्मूला टू टेल यू कि ये फॉलो करें तो फेलियर से बचना शुरू हो जाएंगे। एंड इफ यू स्टार्ट अवॉइडिंग फेलियर, देयर इज अ हायर लाइकलीहुड यू विल बी सक्सेसफुल, राइट? उसके लिए जरूर, अब आप डिजाइन थिंकिंग भी कर रहे हैं ना, तो उसके अंदर भी केपीआईज है। डिजाइन थिंकिंग जनरली कॉर्पोरेट्स के अंदर ओपन एंडेड चल रहा, डिजाइन थिंकिंग ओपन एंडेड प्रोसेस है, और वो ओपन एंडेड जब तक आप क्लोज लूप नहीं करेंगे, उसके साथ केपीआई सेट नहीं करेंगे, वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करेगा। अदरवाइज आप प्रोसेस रन करते रहे कर रहे होंगे, टाइम लिमिट भी सेट कर रहे हैं और केपीआई सेट नहीं कर रहे, वो कभी भी खत्म नहीं होगा। सो यू नीड टू सेट केपीआईज कि इस प्रोसेस के थ्रू मैंने ये चीज अचीव करनी है, देन यू विल बी एबल टू मेक प्रोग्रेस। इस तरह जब आप प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट अचीव कर लेंगे तो प्रोडक्ट मार्केट फिट की तरफ आ जाएंगे। वहां पर भी केपीआईज है, यू नीड टू एक्टिवली ट्रैक दोस केपीआईज। और उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। एक कस्टमर एक्वायर करने में आपकी कितनी कॉस्ट आती है, ये जनरली स्टार्टअप को नहीं पता होता। सो यू नीड टू नो दिस, ताकि आपको पता हो कि आपको कितना मार्केटिंग बजट चाहिए। फर्ज करें आपकी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन 1000 रुपए है, एंड यू नीड टू एक्वायर 2 नए कस्टमर चाहिए, 2000 रुपए का मार्केटिंग बजट चाहिए। सो अगर आपको कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन ही नहीं पता, और दूसरा लाइफ टाइम वैल्यू, लाइफ टाइम वैल्यू हम स्टार्टअप्स को जरूर रिकमेंड करते हैं। 1 साल स्टार्टअप जो कस्टमर आपसे 1 साल के अंदर परचेजेस करेगा, टोटल वैल्यू ऑफ दैट्स लाइफ टाइम वैल्यू। लेट्स से आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू 1000 रुपए है, कस्टमर साल में आपसे 2 दफा बाय करता है, तो 2000 रुपए का 1 साल में वो आपसे रेवेन्यू देगा। टोटल एक कस्टमर आपको साल में 2000 रुपए का रेवेन्यू देगा अगर आपकी प्रोडक्ट वैल्यू 1000 रुपए है और कस्टमर साल में 2 दफा बाय करता है, तो 2000 रुपए का रेवेन्यू। नो यू नो कि मेरे कस्टमर जो मेरे से जुड़ेगा मुझे 1 साल में 2000 रुपए का रेवेन्यू देगा। नाउ यू कैन डिसाइड कि आप उस कस्टमर को एक्वायर करने में कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। 1/3 ऑफ लाइफ टाइम वैल्यू, आइडियल रेशियो इज 1 to 3। करीम और ऊबर के केस में दिस इज 9 to 10। कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन टू लाइफ टाइम वैल्यू रेशियो, ये करीम और ऊबर के केस में 10 से भी ज्यादा है। दैट्स वेयर वायरलिटी इज, दैट्स वेयर मैजिक इज। सो आपने 3 से ज्यादा अचीव करना है।
सो जो आपका पूरा डिज़ाइन थिंकिंग प्रोसेस है उसके थ्रू जो बिजनेस मॉडल इवॉल्व होगा वो उसका जो टेस्ट है वो ये है कि आपका जो बिजनेस मॉडल है वो एट द एंड क्या आपको ये देता है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन टू लाइफ टाइम वैल्यू रेशियो ऑफ मोर देन 3, कि आपकी कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन शुड बी 1/3 ऑफ लाइफ टाइम वैल्यू। लाइफ टाइम वैल्यू अगर फर्ज करें 3,000 रुपए, एक कस्टमर आपसे साल में जो भी परचेजेस करेगा, लेट्स से वो 3 परचेजेस करता है और आपकी प्रोडक्ट की वैल्यू 1,000 रुपए है, 3,000 रुपए का वो रेवेन्यू देगा टोटल। सो यू कैन स्पेंड अप टू 1/3, 1,000 रुपए तक का आप पैसा खर्च करके नया कस्टमर ऐड कर सकते हैं। और जब आपको ये पता हो, ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट KPIs है, वंस यू फिगर्ड आउट दीज, आपको ये पता है कि मैं 1,000 रुपया और खर्च करूंगा मार्केटिंग पे, एक कस्टमर आ जाएगा। अब आप ये गेज कर सकते हैं कि मैं कितनी स्केलिंग कर सकता हूं, मैं कितने कस्टमर हैंडल कर सकता हूं। अगर मैंने 1000 कस्टमर को सर्व करना है या 1000 प्रोडक्ट सेल करना है, तो मुझे बाकी प्रोसेसेस किस तरह से स्केल करने होंगे, मुझे टीम कितनी स्केल करनी पड़ेगी, HR कितना ऐड करना पड़ेगा, फैक्ट्री में कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी ग्रो ऐड करनी पड़ेगी। सो वो सारी चीजें अब आपके सामने नजर आना शुरू हो जाएंगी। दैट्स हाउ यू ग्रो। सो ये KPIs को समझना, उनको इंप्लीमेंट करना हम आपको ये सिखाएंगे। इट्स योर जर्नी, यू हैव टू ट्रेवल। और फिर अब जब आगे जाएंगे ग्रोथ पे, फिर ग्रोथ स्टेज की KPIs हैं। ट्रस्ट में अगर आप ये जर्नी प्रोसेस फॉलो करते हैं, देयर आर बेटर चांसेस ऑफ सक्सेस, एंड दिस इज व्हाट एन इन्वेस्टर वांट्स टू सी। इन्वेस्टर आपसे बिजनेस मॉडल भी नहीं पूछेगा, वो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ना ये कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन टू लाइफ टाइम वैल्यू, सबसे पहला क्वेश्चन अर्ली स्टेज कंपनी से ये पूछा जाता है। तो अगर आपने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं एक कस्टमर और एक्वायर करने की कॉस्ट क्या है, उसकी लाइफ टाइम वैल्यू क्या है, तो आप अंदाजे से बिजनेस बना रहे हैं। दैट्स टिपिकली डिफरेंस बिटवीन ए बिजनेस एंड ए स्टार्टअप। बिजनेस जो है वो अंदाजे पे चल रहा होता है, और सक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, देयर इज नो हार्म, ट्रस्ट मी, सेवर इज अ वेरी सक्सेसफुल बिजनेस। लेकिन हिट एंड ट्रायल से उन्होंने ये सारी चीजें अचीव की हैं, हिट एंड ट्रायल से। नाउ योर चॉइस है कि आप हिट एंड ट्रायल से वो अचीव करें, या हमसे कुछ फ्रेमवर्क्स, कुछ मेथोडोलॉजी सीख लें, बोरो कर लें, एंड देन इंप्लीमेंट दोस फ्रेमवर्क्स एंड मेथोडोलॉजीज एंड ट्राई टू फेल ऑन पेपर रादर देन फेलिंग इन द फील्ड। आपने अक्सर मार्केट में देखा हुआ है, एक बिजनेस नई शॉप खुलती है विद लॉट ऑफ पंप एंड शो, एंड 2 वीक्स डाउन द लाइन वो डिसअपीयर हो जाते हैं। वो बिजनेस है, वो किसी ने आंच था, सोचा यहाँ पे गारमेंट्स की नई शॉप बनानी चाहिए, बना दी, 10-20 मिलियन रुपए खर्च कर दिए, देन फाउंड आउट कि नहीं ये तो यहाँ चल ही नहीं सकता। यू कैन डू दिस ऑन पेपर एज वेल। वो 10-20 मिलियन रुपए खर्च करके पहला फेलियर हिट करने से बहुत बेहतर है कि इन वेरी कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, डिजाइन थिंकिंग फ्रेमवर्क फॉलो करके आप जल्दी से फिगर आउट कर लें कि यार इस्लामाबाद में लुंगी का बिजनेस नहीं चलने लगा, राइट? सो वो that's what our effort is. फिर आपके साथ ये कोई 10 तरह की कार्रवाइयां कर रहे होंगे, ठीक है, जिसमें कुछ पढ़ा रहे, सिखा रहे होंगे, फिर अगेन घबराना नहीं है यार, ये जस्ट हमें डराने के लिए कुछ भी नहीं, इस तरह की बातें कर रहे होंगे। लेकिन मैं एक क्विक बस जो फाइनल पॉइंट, 3 चीजें जो आपने रिलीजियसली ट्रैक करनी है, जो हमने भी आपके साथ करनी है। दैट इज ट्रैक्शन, कितने पेइंग कस्टमर्स हैं, नंबर 2 कितनी जॉब्स क्रिएट की हैं, कितना रेवेन्यू जनरेट, इन्वेस्टमेंट रेस की है। ये मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ। जब हम डिस्कशन कर रहे होंगे तो मैं आपसे यही पूछूंगा कि आप किस स्टेज पे हैं अभी, एंड आई वुड लव टू हियर योर प्रॉब्लम्स। दैट्स माई मैंडेट, दैट्स व्हाट आई लव डूइंग, टू हेल्प यू सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग बार बार आके हमें तंग करें, हमें अपने प्रॉब्लम्स थ्रो करें, हमें फॉर्मली ईमेल लिखें, व्हाट्सएप करें, आके मिले, टाइम लें, शेयर योर प्रॉब्लम्स विद अस, बट एक स्ट्रक्चर तरीके से लेके चले। आप मुझे बताएं कि यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे स्टक है, ये प्रॉब्लम है, हेल्प अस गेटिंग दिस रिजॉल्व। इस इंक्यूबेशन सेंटर का हरगिज ये पर्पज नहीं है कि सिर्फ आप यहाँ आके बैठे रहें। आप यहाँ आके बैठे और अपने प्रॉब्लम्स हमसे शेयर करें, विल हेल्प टुगेदर, विल सॉल्व योर प्रॉब्लम्स। दैट्स द पर्पज ऑफ दिस इंक्यूबेशन सेंटर। और along this journey,
celebrate every little milestone that you achieve. बहुत ज़्यादा बोरिंग भी नहीं करना हमने, बहुत ज़्यादा आपको थकाना भी नहीं है कि यार ये पता नहीं बड़ी सीरियस बातें ही करते रहते हैं. तो for you, it's good for your startup as well that you celebrate every little win, every single little win. You need to enjoy this journey. मुश्किल काम है बट बड़ा रिवॉर्ड भी है, राइट. और मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना है. मरीम उस पर ज़्यादा बात करेंगी. ये मेंटल हेल्थ इज इम्पॉर्टेंट एज वेल. और फिर मैं ये एक कॉन्सेप्ट है नॉर्थ स्टार केपीआई. वन केपीआई जो कि आप हर वीक फॉलो कर रहे होंगे, ट्रैक कर रहे होंगे. यू हैव टू फिगर आउट व्हाट्स योर नॉर्थ स्टार केपीआई. वो हो सकता है रेवेन्यू हो सकता है नंबर ऑफ कस्टमर्स हो सकता है टोटल सेल्स वॉल्यूम हो, वैल्यू हो, इट वेरीज. बट यू नीड टू स्टार्ट थिंकिंग. और डरे मत, पहला पिक कर लें कोई और उसको फॉलो करना शुरू कर दें, उसको ट्रैक करना शुरू कर दें. इट विल चेंज योर लाइफ्स. हाँ, अब आ जाए हम क्विकली कि एक साल में जो इंक्यूबेशन है, इट स्टार्ट्स विद लीडरशिप. और फिर उसके बाद अगर आप देखें नंबर 3 से लेके नंबर 7 तक 5 वीक्स हम डिज़ाइन थिंकिंग पे काम करें. तो मैं अगर इसको प्लॉट करूं, सो वी स्टार्ट विद लीडरशिप और फिर डिज़ाइन थिंकिंग जो है ना आप एक मुश्किल जर्नी है. बट ट्रस्ट मी, डिज़ाइन थिंकिंग के थ्रू आपका बिजनेस मॉडल इवॉल्व होता है. तो हम बिजनेस मॉडल कैनवस यूज़ कर रहे होंगे. बिजनेस मॉडल कैनवस ऑनलाइन भी पड़ा हुआ है, कोई भी उठा के फिल कर सकता है. बट दैट्स नॉट द जॉब. बिजनेस मॉडल फिल कोई भी कर सकता है उस कैनवस को, लेकिन उस कैनवस को इवॉल्व करवाना टेलर टू योर स्टार्टअप एंड विद रियलिस्टिक डेटा, दैट्स द डिफिकल्ट पार्ट एंड दैट्स व्हाट यू हैव टू डू विद अस. बिजनेस मॉडल इवॉल्व होगा अगर, और उसके थ्रू आइडियली यू अचीव प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट. वंस यू हैव अचीव द प्रॉब्लम सोल्यूशन फिट और एक बिजनेस मॉडल अचीव कर लिया है जिसमें कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन टू लाइफ टाइम वैल्यू रेशियो इज ग्रेटर देन 3, यू हैव ग्रेट बिगिनिंग. फिर आगे बढ़े और फिर चीज़ें फिर एरोस्पेस के कोर कोर्सेज भी शामिल हैं. जो आप में से एरोस्पेस स्टार्टअप्स हैं वो सारे एरोस्पेस के कोर्सेज भी लेंगे, बिकॉज आपकी प्रोडक्ट जो है वो उसके लिए एयरवर्दीनेस सर्टिफिकेशन चाहिए, डिफरेंट सर्टिफिकेशन चाहिए. यू विल टेक दैट. और उसके बाद फिर फाइनली हम नंबर 14 पे अगर आप देखें तो ब्रांड बिल्डिंग पे वापस आ रहे होंगे. आपने जो बिजनेस मॉडल इवॉल्व किया है इस प्रोसेस के थ्रू, उस पे एक जो प्रोडक्ट बनेगी अब उसके इर्द गिर्द एक ब्रांड भी डालना है, किस नाम से लोग उसको जाने. पेप्सी का एड हर दिन टीवी पे आ रहा है टू रीइंफोर्स द ब्रांड. पेप्सी कोई इनोवेशन नहीं कर रहा, बट वो हर दिन आपको याद कराते हैं वेयर हेयर. हमारी करंट मेमोरी में पेप्सी होती है. दैट्स व्हाई वेयर एवर वी गो वी आस्क के पेप्सी या कोक चाहिए. वो ब्रांड रीइंफोर्समेंट भी है. पहले बिल्ड करेंगे और फिर रीइंफोर्समेंट तो मार्केटिंग के अंदर हम जाके देखेंगे. एंड देन फिर जो अदर टर्म 1 के अंदर ये गोल है, एंड देन टर्म 2 के अंदर आप बैंकिंग, जो एडमिनिस्ट्रेशन, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी, वो सारे मॉड्यूल्स वहाँ जाके देखेंगे, आपको वो हेल्प वहाँ मिलेगी सारी. एंड देन फिर एरोस्पेस के कुछ एडवांस कोर्सेज हैं वहाँ पे. एंड देन फाइनली हम स्केलिंग की तरफ आएंगे, ग्रोथ हैकिंग और स्केलिंग. सो दिस वुड बी समवेयर लाइक पहली टर्म आपकी 6 months एंड देन अनदर 6 months to 8 to 10 months डाउन द लाइन हम जाके स्केलिंग पे आपके साथ काम कर रहे होंगे, वेयर वी बिलीव एंड वी होप कि मोस्ट ऑफ यू आर रेडी टू स्केल योर प्रोडक्ट्स. और फिर उसके बाद फंड रेजिंग, इन्वेस्टमेंट रेडीनेस और फंड रेजिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. पूरी जर्नी के दौरान हम आपके साथ इसी पे काम कर रहे हैं कि यू बिकम इन्वेस्टमेंट रेडी. मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी टू पिच टू इन्वेस्टर्स, यू जस्ट नीड टू बी रेडी. कोई लाजमी नहीं है कि आपने इनको इस सीक्वेंस में फॉलो करना है. यू ऑल आर ग्रोन अप. आप किसी भी जगह पे हॉप कर सकते हैं एंड स्टार्ट रीडिंग एनीथिंग. हम आपको ये एक करिकुलम में आपको मिला है जिसमें आउटलाइन है, जिसमें वीडियोस हैं, प्री रीडिंग्स हैं. यू कैन स्टार्ट रीडिंग दैट कंटेंट, यू कैन स्टार्ट व्यूइंग दोज वीडियोस, इट्स अप टू यू. एंड सेकेंड ये कि आपको डिटेल्ड करिकुलम भी मिल जाएगा जिसमें बहुत डिटेल होगी हर मॉड्यूल के हवाले से. आप कोई भी चीज़ पहले से पढ़ना चाहें, इट्स योर कॉल. यू फील लाइक कि कुछ रेलेवेंट है आपके लिए और अभी पढ़ना है आपने, अभी देखना है, जस्ट कंज्यूम दैट एंड आस्क अस क्वेश्चंस. अब जो वेडनेसडे को टिपिकली सेशन हुआ करेगा आपके साथ,
ये जो फॉर्मल सेशन जिसमें हम भाषण दिया करेंगे, और बाकी उसके अलावा फाइव चैट्स रमज़ान में अगर आप चाह रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा तंग नहीं करें, रमज़ान के बाद आई प्रॉमिस यू कि हम बहुत ज़्यादा तंग करेंगे, जिसमें बहुत सारे हम इवेंट्स यहाँ पे क्रिएट करेंगे। आइडिया रियली है इसके हम लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए बढ़ा दें। नो इंटरेस्ट कि आपको सिर्फ यहाँ पे बिठाया जाए और पनिश किया जाए, बट रादर रियली ऐसे मेंटोर्स को बुलाया जाए, ऐसे बिजनेस एक्सपर्ट्स को बुलाया जाए जिनकी 5 मिनट की बात हो सकता है कैन सॉल्व वन ऑफ योर मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स। हाँ यार, ये मुश्किल पार्ट है, इसको छोड़ दें बस। इस पे हमने डराना नहीं है आपको कि जी ग्रेजुएशन भी करनी है। यू ऑल आर ग्रोन अप्स, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट वन नोट, कितने लोग वन नोट से फेमिलियर हैं? कितने लोग यूज कर रहे हैं वन नोट? वन नोट इज लाइक अ डिजिटल डायरी। सो अगर आप अपना काम सारा प्रिजर्व करना चाह रहे हैं, कल को भी आपके काम आए, सो वन नोट इज योर फ्रेंड। सो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू ऑल कि आप वन नोट यूज करना शुरू करें। इट्स अ डिजिटल डायरी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर ही आता है। अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, जस्ट ओपन वन नोट। उस पर कभी हम एक ट्यूटोरियल भी कर देंगे आपके साथ टू गिव यू जंप स्टार्ट, बट इट्स अ सुपर इजी टूल और आप अपना सारा काम प्रिजर्व कर सकते हैं। जो भी आपकी क्लास नोट्स है, ये इंक्यूबेशन की लर्निंग्स है, और वो सारी वहाँ पे आप प्रिजर्व कर सकते हैं। द बेस्ट थिंग इज कि वो सर्चेबल टूल है। अगर आप फिजिकल डायरी पे लिख रहे हैं ना, ये आफ्टर सम टाइम विल फेड अवे, बट अगर आपने वन नोट में अपना काम डॉक्यूमेंट कर दिया, सेव कर लिया, तो इट्स सर्चेबल और बाद में भी काम आएगा। एट एनी टाइम यू कैन पुल दैट बैक एंड रेफर टू इट। उसके अलावा हम स्ट्रांगली इंकरेज करेंगे कि आप ब्लॉग्स लिखें, अपनी लर्निंग्स शेयर करें। मीडियम पे कितने लोग लिखते हैं? मीडियम पे लिखें, जो आप सीख रहे हैं वो लर्निंग्स दूसरों के साथ शेयर करें। ट्रस्ट मी, द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। द बेस्ट वे टू लर्न इज टू टीच। और आप ऑनलाइन दूसरों को सिखाना शुरू कर दें, जो सीखा है वो शेयर करना शुरू कर दें। इट विल स्टार्ट गेटिंग मल्टीप्लाइड। और इसके बाद बुक्स ज़रूर पढ़ें, बुक समरीज। आप ऑफिस ट्रैवल करते हुए बुक समरीज सुन सकते हैं। यहाँ पे ये कुछ सोर्सेज हैं, यू कैन फाइंड मेनी मोर। 5 मिनट में यू कैन हैव अ समरी ऑफ अ बुक। अंडर ग्रेड डिग्री में ना हम सब ने कुछ 40 किताबें पढ़ी हैं, 40 कोर्सेज होते हैं रफली। उनमें से कोई एक किताब भी नहीं थी लीडरशिप पे। आई कैन बेट ऑन दैट। आप किसी भी डिग्री से आ रहे हैं, चाहे इंजीनियरिंग से आ रहे हैं, फाइनेंस, मार्केटिंग, जिससे भी डिग्री से आ रहे हैं, कोई एक भी लीडरशिप पे बुक नहीं थी, कोई बिजनेस बनाने पे नहीं थी, लाइफ स्किल्स पे नहीं थी, हाउ टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग उस पे नहीं थी। इट्स योर जॉब नाउ टू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। ये कुछ एडिशनल सोर्सेज हैं। इस तरह के हम बहुत सारे आपको तंग करते रहेंगे एडिशनल सोर्सेज के साथ। ये तो भी जस्ट बिगनिंग है। हमारे पास बहुत लंबी लिस्ट है जो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। दैट वुड हेल्प यू टू फाइंड सोल्यूशन फॉर जो आपके डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए। थैंक यू वेरी मच। नाउ आई वुड लाइक टू इनवाइट मरियम सलीम खान जी, प्लीज। सॉरी मरियम। बिल्कुल, आईपी राइट्स पे हम स्पीकर्स भी बुलाते रहेंगे और वर्कशॉप स्केड्यूल में वो थोड़ा देर में है, बट हम जल्दी बुला लेंगे। जो एडिशनल सेशंस हैं वो मैं यही अर्ज कर रहा था कि हम एडिशनल लर्निंग्स आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे, जिसमें आईपी राइट्स इज ऑन आवर माइंड। ये बिल्कुल आएगा। वो सिर्फ पेटेंट नहीं होगा, जनरल प्रोटेक्शन भी, कि अगर आपने कॉपीराइट करना है, कॉपीराइट इज़ वन वे। फिर उसके बाद आपने कोई लोगो अपना करवाना है रजिस्टर, दैट्स वन थिंग। और फिर पेटेंट एक है, नेशनल पेटेंट है या ग्लोबल पेटेंट है, उस पर फिर आपके पास आते रहेंगे। और नाउ आई विल इनवाइट मरियम सलीम खान फॉर डिज़ाइन थिंकिंग। Hello everyone. I think I can use without that. You guys can hear me. YouTube will like all the audio. Oh, this will be live. Audience. Live audience should be here by then. I sounded maybe
My name is Mariam Khan. I will give a quick introduction of mine so you know that this is not the only thing that I'll help you guys with. I would want to stay connected with the startups here for their betterment, of course, and for more collaborations that we can expect. I am a master coach for NLP. Neuro-linguistic programming. I am not a psychologist, but I am a coach. So there are a lot of things that a coach can help you with that usually a psychologist does not. So I don't help you with your mental health only. I help you with your productivity as startups as well. So that could be another thing that you could explore in the future. Other than that, today I bring design thinking to you. Now, बहुत सारी information इमरान ने share की है, बहुत important information share की है, and I believe that all of that is going to help you. You already have that written down. But what's more important is कि ज़रा जाग जाएं और थोड़ा सा human element को feel करें, ठीक है? So for that I've planned a quick activity for you. I don't know any one of you, by the way, and you don't know me either. So let's just build that knowledge first, and then we'll, add another human element to that later. Okay? So let's see. Okay. This is going to be the agenda for us. I would like to keep it brief because it's 2-hour session. Design thinking cannot be accommodated in 2 hours or 5 sessions, by the way. So we are going to touch base on all the important elements, and then you are going to come back to us and ask us whether we need further clarity and further help in that or not. So it's more like it's like the flavor testing that we are giving to you guys. So we have origin, concept, phases, principles, features, and another very important activity by the end. So let's stick to that. Okay, let's do this one first. So what you have to do, I'll give you the quick instructions and we'll start doing the activity. So you have to find 2 people. For instance, what's your name? Wahid. Wahid. Okay, so Wahid, you have to find 2 people who are who have these common with you. Anyone, ideally all of them, but if you can stick to 5, that means you're done. So you have to find 2 people whom you're similar to in these 5 aspects or in these 10 aspects, right? Time starts now, please get up. And I'm giving you literally 5 minutes for that. Please, all of you. And roam around the room, speak to anyone you feel like. Please don't talk to people you already know. So yes, please, get up, yes. Get up, guys. Talk to people you don't know. Do not talk to people you already know. I can sense it. I am a coach. ऐसे ही होता है अपने वाले को importance. Let's see how many of you are similar in 12, number 12. More minutes. One more minute.
Okay, thank you, thank you. You guys can build on this conversation. I hope this helped. Please, please have a seat. So I'll take a couple of volunteers and I would want to ask. Sorry, I'll start with you only. Fahad, right? Wahid, who did you pick? Or who did you find? Okay. Okay. Nice. Mm-hmm. At least 5 to 6 are there. So you found Hamza. Where's the other one? Hamza and? You did. So now you see, we don't know each other either, okay? That's very, very important. And this sort of questions, of course, that does not come in the first meeting, but that's why we have these sessions, okay? So we'll kind of take the leap. Number 12, who's common with that? Conspiracy theories? We can have another session on that soon. Okay, yes please. So let's move on to the human part, okay? This was also human as well, by the way. Have you ever heard of this person, Horst Rittel? Never? Okay. He was the person, he was a design theorist, okay, who came up with a concept of solving a problem. But first of all, before solving that, he named that problem. And he named that problem what? Wicked problem. So he defined the concept of wicked problems, and then why would he do that? He did that so that he could find a solution to those problems. That's what's happening, okay? We don't know what kind of problems we have. So first of all, we need to find out whether this is a wicked problem. If yes, then we have a solution for that. And that is human-centered design, HCD. Okay? We will build a lot more on that. But before that, let's find out what a wicked problem is. You can see a lot of components here. I'll just pick one or two of them. The rest you can read. Solutions are not right, wrong, but better or worse. Can take a long time to evaluate solutions. Problems are never completely solved. So many things around you. So many things. Infrastructures को उठा लें, आप systems को उठा लें, आप processes को उठा लें, लोगों को उठा लें. There are so many issues and problems which can be named wicked. In Pakistan, I'm talking about. And then, how do we solve them? We solve them by keeping the human element in mind. Human is important. हाँ, हमें पैसे बनाने हैं. Yes, we will. And of course, there will be traction. We are going to sell more units as well. But then by the end of the day, or even before everything, if you're not doing it for humans, then you're actually falling short on the major concept, the core concept of your startup, all right? So it's every solution of your startup should be targeting the behavior aspect of humans or the customers in a nutshell, okay? Yes, please. Who just wanted to build on what the origin of HCD is, human-centered design is. So human-centered design was championed as a name by Herbert Simon, developed and taught by Stanford University D School. You should also do the virtual crash course of D School. And of course, leveraged by Design from IDEO. You all should explore what IDEO does on design thinking, what Stanford D School does on design thinking. And then it became a problem for it became a solution for problem solving that begins with understanding human needs. Human needs. So I'll take a step back and I'll tell you, when you say a human being, one thing that comes to your mind, other than the appearance of that human, what is that? When you meet any person, other than the appearance, what else do you note in that person? Anyone? Red shirt. Sorry, I don't know the name. Yes, please. Again, that's the appearance. Anything else that you note? Humans. Human, जब एक word सोचते हैं दिमाग में, तो क्या आता है दिमाग में? Voice. Okay, good. Anything else? Sorry? How the person interacts with you. Good. It's the connection or communication. Good. Anything else? Think about human. What comes in? Nice. I like that. Very good. Sorry? Good. Very good. Somebody's missing out on a very, very important point. Human. Insan. Sorry? Appearance ho gayi na?
Aspirations good, dreams हो गए good. Very nice, हम close जा रहे हैं. Good, thinking पे आ गए. Anything missing? Human. Behavior तो end product है. Behavior आपका showcase है. हो क्या रहा है दिमाग में? Thoughts आते हैं तो उसके बाद क्या होता है? नहीं, वो तो action है. Thought आया तो उसके फौरन बाद क्या होता है? For example, एक thought आया, this guy is being mean to me. उसके बाद क्या हुआ? Thank you. Yes, feelings, emotions. That is the factor that makes you a human. Yes, you have a thinking brain. Of course, everything is driven by the thought. As I'm a coach, I can tell you very clearly कि आपके साथ जो मसले हो रहे हैं वो सारे आपके दिमाग में, for sure. Okay? उसको multiply by X भी आपका दिमाग करता है, but उसको actually action में क्या convert करता है? Your feeling and your emotions. That's what happens with the customer as well. So you have to tap the emotion for that customer. That is the human element that we talk about in the ACD. You can explore that course as well. I can give you the links to it. But how did it originate? It started from Plato. You know Plato, the scholar? Way back, आपने Socrates का नाम सुना होगा, Plato का नाम सुना होगा. So they started with participatory design. He would go and he would ask people, question करता था और उनके साथ बैठ के solutions design करता था अपनी community के लिए. Participatory design के बाद UCD आया, user-centered design. But what was the problem? UCD पे stop हो जाना चाहिए था ना, because we have already hit users, right? No, there was a problem. Then came service design. A lot of technology, a lot of quantitative work, a lot of data-centric work was happening in that. And then came HCD, human-centered design. But what happened? Why did we move from user-centered to human-centered? Again, the concept is humanizing it. आप imagine करें, you, of course, I don't want to take that example, but again, that example is going to fit here a lot. When you have an enemy, or you have any kind of hostility with some person, some team, some person, some country, whatever, okay? Not going into that detail. Just talking about the concept right now. When you have any animosity or enmity with someone, जब आप उसमें से emotions और compassion निकाल देते हैं, then you can serve the purpose of letting that enemy down. You're getting me? So you remove the human element, you'll be able to hit the enemy better. If you stop feeling for the enemy, you'll be able to surpass that enemy better. That is what was happening when we were using UCD. People were treating customers as users. There was no human element. They were like, whatever. But when you put the human element there, that is where you start caring about the customer, and then you start building your presence as a startup and a successful company as well. So that's what we have to learn here. It's not a method, it's a mindset. Human-centered design is a mindset. हमें सोचना शुरू करना है as humans. So probably ये incubation center में जो आपका experience है, ये सिर्फ आपको as a startup grow नहीं करेगा, it's going to grow you as an individual as well. So that's why we all have combined together with all our expertise to tell you what is actually important. So the first step is actually the mindset. How many of us have this? कोई quick छोटा सा survey कर लेते हैं. Empathy किस में है इसमें यहाँ पे group पे? Oh, very empathy, very good, nice, okay. Optimism, good yaar. Okay, I want to see how many of you raise, which one gets the maximum votes. So let's say who is confident. What happened at the back? I'm here for you guys, okay? All right, so who learns from failures? अच्छा उसका opposite है, who gets depressed when there is a failure? होना चाहिए. If you're not having it, so कुछ humanly possible, उसमें missing है. And then who believes in trying again and again? Iteration. Good. Okay. So we already have a mindset. Something is missing. जो मैंने नाम नहीं लिया. What is make it? I know broken. Yes, put it into action. Thank you. Because वही बात है ना, जल्दी fail होना है. Fail होंगे. It's not like we're gonna make you fail proof. And there is no such thing as fail proof. You will make mistakes, but you have to do it faster. That's why the agile term. So make it, fail it, and make it again. Okay. Concept, I told you, from dehumanize to humanize, but थोड़ा सा और इसके बारे में जानते हैं, and then we're going to get into activities as well.
when you understand the people you're trying to reach and then design from their perspective, not only will you arrive at unexpected answers, you'll come up with ideas that they will embrace. अच्छा, अब इसको इस तरह से लेके चलें कि context की बात करते हैं, right? What is context? What is background? What is situation? For example, एक problem आपके around आपको नजर आता है, ठीक है? और आप उस problem को solve करने के लिए start करते हैं, brainstorming. फिर सडनली क्या होता है, आपने प्रॉब्लम क्रिएट भी कर दी और सेलिंग भी शुरू कर दी, वो बिका नहीं. क्यों? क्योंकि आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्टेक्स्ट मिस कर दिया. आर यू गेटिंग दैट कॉन्सेप्ट? कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये है कि एक यूजर किस किस तरीके से उस प्रोडक्ट से इंटरैक्ट कर रहा होगा. लेट्स टेक एन एग्जांपल. एक कैफे और एक सुपरमार्केट है, इम्तियाज, ठीक है, और एक कैफे है, एनी कैफे, ओके. वहाँ पे क्या हो रहा होता है, दोनों में सिस्टम्स तरीका एक है, बट दोनों में लोग एक ही तरह के, कस्टमर एंड होस्ट, बट तरीका डिफरेंट है, सिस्टम्स आर डिफरेंट. हाउ? इन कैफे यू हैव मल्टीपल कस्टमर्स, ऐसे ही है. देयर इज अ पर्सन स्टैंडिंग एंड देयर मल्टीपल कस्टमर्स. मुझे चाय चाहिए, मुझे कॉफी चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, राइट? एंड यू आर डीलिंग विद ऑल ऑफ देम. इन द सुपरमार्केट यू हैव वन कस्टमर, 10 आइटम्स. ऐसे ही है, आप जल्दी जल्दी उसको 10 आइटम्स को कर रहे होते हो, और यू नो you're making the bill of that one customer. ऐसे नहीं है कि 3 कस्टमर खड़े हैं और तीनों को एक साथ हो रहा है. So the system is different. What happened? You understood the context of your user. That's what we need to do when we talk about their human needs. Sorry, did I? Okay, yes. We are here to solve problems, and we see that they are very often involving people. And with people comes the understanding of their emotions. Call it UCT, user-centered design can dehumanize it. That's an argument made by Simon Barron. I would rather that you read this book. Simon Barron wrote a book called 0 Degrees of Empathy. And he told you, that's exactly what he discussed, that when you dehumanize, you can actually ruin that thing. It's easy to destroy it when you dehumanize it. And it's easy to build it when you humanize it. This is what HCD is. It's a creative process. It's a mindset for you. Okay? It involves people. It starts with people. It has to end with people. You cannot remove people from there. ऐसा नहीं हो सकता कि आप कहें कि यार ये प्रोडक्ट है, इसमें ये इनोवेशन करना है, ये एक ट्वीक है क्योंकि मेरे इन्वेस्टर ने बोला है. आप वो करेंगे, बट आप उसको सारे एस्पेक्ट से चेक भी करेंगे कि हमारा कस्टमर बाउंस बैक तो नहीं हो जाएगा. राइट? सो दैट्स हाउ मच यू हैव टू टेक केयर ऑफ द and customer, and it is a design with people process. Do with, जैसे coaching do with process है. Coach therapist नहीं होता है, coach do with process करता है, facilitate करता है आपको बेहतर बनने में. Similarly, design, human-centered design is a design with process. It's not a design for process. Okay? We have the terms here. इसमें बहुत important एक point है. If you can pick that out, that means you've already, you know, you're already there. Which, sorry, what? Thank you. Yes, it's observation. Why is observation important? In human-centered design, the very, very, very important point is to observe. Can you tell me how to observe anyone? I mean, you're sitting here, you're observing everything that is happening. So what are some ways to observe? If I send you, for instance, let's give you a situation. I'm doing a research on, let's say, कौन सी communities हैं पाकिस्तान में जिसमें cancer penetration ज़्यादा है, right? तो आप उसकी observation कैसे start करेंगे? Search करके internet पे, or what? Oh, you're going to go to the chemo ward. That's a good, good angle. Anybody else? It's a community. It has a lot of cancer patients. People don't know why only that community is being stuck with that. Now we have to resolve it. So how do you observe? Or where will you observe? What's your name? Abdullah. Wahab. Wahid Wahab Zarak, right? Okay. Yes. You go to the community and you observe. But how do you observe? वहाँ बैठ जाएंगे कुर्सी लगा के. Thank you. You interact. And how do you interact? How? What do you say? You ask her? Thank you. So you have to have a set of questions with you.
आप ये नहीं कह सकते ब्रो आपके साथ मसला है मैं सोल्यूशन लेकर आया हूँ, ऐसे नहीं बोल सकते आप, राइट? सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर गोइंग एंड आस्किंग द राइट क्वेश्चंस. एंड व्हेन विल यू आस्क द राइट क्वेश्चंस? व्हेन यू आर लिसनिंग. So you start with the listening activity. That's how you become a human. Your human being starts from your empathy starts from the fact that you are an empathetic listener. Okay? If you can't practice that, there is a lot of things that you need to still work on as a human being. मैं constantly coaching elements piece में डालती जाऊंगी so that you can come back to me and ask me how and why. Anyway, observe is the first part. Second is ideation. बातचीत से ideas निकलते हैं और कोई तरीका नहीं है. एक कमरे में आपको मैं बंद कर दूं सड़क को और उसमें बोलूं यार प्लीज ये इसका सोल्यूशन निकाल के दो, he will never be able to do it. We have to bounce back ideas. Have you seen that series called Dr. House? देखा है? Please do, please watch it. That's what the ideation phase that he does. Okay? Dr. House देखें, उसमें वो diagnostician का head है, diagnostician department है hospital के अंदर, वो उसका head है. And that's what he does. वो actually design thinking use कर रहा होता है वहाँ पे. ह्यूमन सेंटर्ड नहीं कहूंगी उसको, बट वो एक्चुअली सॉल्यूशंस निकाल रहा होता है, लॉजिक बेस्ड, नॉट लेटरल थिंकिंग, लॉजिक बेस्ड. दैट्स व्हाट वी हैव टू डू. वी हैव टू आइडिएट. We'll do an activity. We are going to practice ideation just about in a while. We prototype. I don't know which stage you guys are in prototyping as yet, or you haven't started it. But prototype means जैसे sorry. अच्छा, प्रोटोटाइप हम किस किस फॉर्म में बना सकते हैं? हाँ एग्जैक्टली, एनी फॉर्म. फॉर इंस्टेंस लो-फाई बनाना है ना, हाई-फाई तो नहीं बनाना है, तो किस किस फॉर्म में बना सकते हैं? कैन आई मेक इट ऑन अ पेपर एज वेल? थैंक यू. दैट मीन्स यस प्लीज. या सॉफ्टवेयर अगर आपको यूज करना आता है जरूर, बट कभी कभी दोस्त साथ बैठे होते हैं और एकदम से आइडिया क्लिक करता है, क्या हम प्रोटोटाइप बना सकते हैं बैठे बैठे? इफ यू हैव एन एक्सेस टू अ पेपर और इवन अ टेबल और अ पेन और इवन अ chalk. That's what's happening. So the faster we come to the stage of prototyping, the faster we'll be able to come to the stage of designing that product and then testing it with the real users. Okay, please remember this. ये human centered design माइंडसेट के बारे में बात हो रही है. ये प्रोसेस सिर्फ आपको गाइड नहीं करेगा, वो डिजाइन थिंकिंग की वर्कशॉप में होगा नेक्स्ट वेडनेसडे. ओके, यू हैव टू फॉलो दैट प्रोसेस टू डू योर वर्क, बट दिस इज योर माइंडसेट. यू शुड नो हाउ टू गेट इंस्पिरेशन. क्या इंस्पायर करता है? वैसे अगर मैं ऐसे ही पूछूं किसी से रैंडमली, पिक अ कलर ऑफ योर शर्ट, येलो शर्ट प्लीज, व्हाट्स योर नेम? हमजा. हमजा, व्हाट इंस्पायर्स यू? Nice, I like that. So you like storytelling? I do occasionally just look out for story-based content whenever I can, just to see if I get any interesting ideas. Okay, so what inspires you in that story? Is that the emotion or is that the flow of the story? Probably both, because when you do both, it's just a better story. Amazing, loved it. Thank you, Hamza. Anybody else? क्या inspire करता है आपको? Sir, at the back. What's your name? Abdullah, yes. Use cases. Use cases के बारे में पढ़ के आप, do you think that helps? Use cases के बारे में पढ़ना? Did Apple read on use cases or any other big company that we can think of? इंस्पिरेशन के बहुत सारे तरीके होते हैं. आई एम नॉट सेइंग कि गलत तरीका है. आई एम सेइंग दिस इज ऑल्सो अ तरीका, बट एक्सप्लोर मोर. एक्सप्लोर व्हाट इंस्पायर्स यू. एंड प्लीज लेट मी टेल यू, डिजाइन थिंकिंग और ह्यूमन सेंटर्ड डिजाइन teaches you collaboration, teaches you to think creatively for sure, बट आप उसकी एक्सपेरिमेंटेशन कंप्यूटर पे बैठ के नहीं कर सकते. तो आपको अपने कमरे से बाहर निकल के इंस्पिरेशन ढूंढनी है. ठीक है, समटाइम्स ढाबे पे बैठ के मिल जाती है, समटाइम्स पहाड़ों में बैठ के मिल जाती है, समटाइम्स बीच पे बैठ के मिल जाती है. बट अगर आप अपने कमरे में ही बैठ के इंस्पिरेशन ढूंढेंगे तो शायद देर से मिले और प्रॉब्लम ना मिले. राइट, सो यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट क्लिक्स यू द वे हमजा हैज डन इट. Hamza is saying, right? So we talk about inspiration, we talk about ideation, and we talk about implementation. Again, as Imran Saab said, implementation last step नहीं है. Implementation के बाद evaluation भी है और फिर ये loop चलता रहता है.
तब तक खत्म नहीं होगा जब तक KPI नहीं होगा कि यार कितने अरसे में ये काम कंप्लीट करना है हमने, right? So you remember that. But remember, these three are the phases. If you skip on inspiration, what will you talk about? Ideation में क्या करेंगे? हाँ यार चलो बात करते हैं, किस बारे में बात करते हैं? क्यों बात करते हैं? क्यों is important. So क्यों is your inspiration, right? And then comes your ideation, and then comes your implementation, innovative solution. Okay, ये क्या है? If anybody can give the names to these three things. Louder, louder, guys. Thank you. It's a straw, it's a pen, it's a lamp. Do you know these are innovative products of their times? They actually made a difference. So straw सीधा होता था तो उन्होंने मोड़ दिया. Why? Because again, it's easy and it's human-centric. Humans like it. Pen, पहले ink pen होता था. Fountain pens होते थे. Now we have this kind of pen. And then of course the lamp. It was miraculous, specifically the lamp. Because again, study tables होते थे, पहले ज़माने की बात है. And it was easier for them to actually study there by using this lamp, and it was focused. But now the user is different. Now the user is Gen Z, Gen Alpha. We are probably older than them. I am, you guys maybe, I don't know what ages you are. What ages you are, by the way? Do we have 22 here? Age 22? Really? Very nice. Okay, so you guys are Gen Zs. Okay, so we have Gen Zs. I don't know what clicks you guys. I talk to a lot of Gen Zs. Trust me, everywhere there is a different Gen Z coming in. New behaviors. I'm amazed. What clicks you guys? I don't know. What interests you guys? I don't know. Because next day you like something else. So it's that fast for you guys. So am I in touch with that? Yes, because I talk to you. But how are you in touch with your customer? That is very important, okay? So we design accordingly. Again, these are previous dated, outdated examples, but just to give you an idea कि ये human-centered design है. किसी ने सोचा होगा ना कि यार एक iPod बनाते हैं, but उसके साथ एक clip लगा लेंगे तो वो it's easy to use because I'm jogging, so you know the customer will be happy that way. Again, talk about the tomato ketchup bottle or the water bottle. You can find tons of unique examples on Amazon. Have you ever browsed through Amazon? I am in love with their products. आपको पता ही नहीं होता कि ये चीज़ भी, oh shit, ये भी होना चाहिए था. And the person has come up with that. And exactly, yes, absolutely. Chinese are really, really good with that. But I believe they're not the innovators. They're the hard workers. Yeah? Now they are? Let me get a hold of that as well. Okay. Last but not the least. Okay, that's not last, first of all. The first one, the context. User को identify करें और सिर्फ ये देखें कि वो user किस context में है. ठीक है? कहाँ वो आपको मिलेगा? क्या interaction करता हुआ मिलेगा? If there is maximum interaction happening, those are your contacts, and that is what you need to embed. That's how you need to start your journey of ideation. You start with the user requirements, then you design the product, of course, and then you evaluate. But again, evaluation will not help you. There is a user viability test, right? That is used in evaluation, one of the tools to evaluate. But उसका कोई फायदा नहीं होता अगर आपने context miss कर दिया. So it's a waste of effort for you, right? So we need to make sure that we spend a lot of time on the first step. The second comes naturally, the third comes naturally, and the fourth is of course feasible for you. Finally, पता कैसे चलेगा सब कर लिया? That you're meeting all the requirements. The maximum requirements you meet, the maximum satisfaction you gauge for the customer. The maximum human element you have. अच्छा, 𝐒𝐞𝐬 का full form क्या है? You guys read it and tell me what is the full form of 𝐒𝐞𝐬. Read between the lines. Nice, who did it? Good job, thank you. Of course, aerospace technologies, of course. You had to know. But yes, so that's the thing. To make the life easier for an 𝐒𝐞𝐬, you will not just start straight to the automation of the entire process. ऐसे नहीं करते हैं. You will go and you will go and observe the contexts that are revolving around that person, that 𝐒𝐞𝐬, right? And then you will start building the solutions for them. Faster, nimbler solutions, better chances for becoming a successful startup. Yeah? Okay, I want you guys to watch this video. Do I have help? Okay, the help just went out.
I will play this video. Who are these people? These people are actually the company 𝐈𝐸𝐷. So they are sharing their journey of design thinking, how it helped with them. Okay, and they're sharing actually, perfect. Well, let's see if, okay. I hope no ad comes in. Thank God. Can you hear? Okay, hold on. Technical glitch. Anybody knows how to play the sound here? नहीं वो तो मुझे पता है यहाँ से तो मुझे पता है वैसे हाँ I think the sound is not connected, is it? No, it's not. Excuse me. हाँ. Can you? Okay, so when Uber came, okay, when Kareem came, बहुत सारी गाड़ियों में आपने देखा होगा कि वो होल्डर्स आ गए जिसमें सेल फोन्स लगा देते हो आप, राइट? पर उससे पहले उसकी कोई नीड नहीं थी. But the need was created by that respective startup. So that is the thing that you need to do as well. ये इस पे, sorry, can't hear me. Sound connect कर दें, please. Thank you. So we would like to hear what the experts are saying. Okay, 𝐈𝐸𝐷 is the company that leads this practice-wise, practically for corporations. So see how they have done it, and try to pick it what fits to yours. Because I'm going to ask you कि आप अपने पास अभी क्या idea लेके बैठे हुए हैं in your head, and how do you think that is going to help you with? जो play कर दूँ मैं एक मिनट, वहाँ से play पे click करते हैं. हाँ, ये है ना play. जी आवाज़ नहीं है. You guys can read the subtitles. Anyway, till the time video is played, we are going to, after this there is an activity for you guys, and I would like to अगर नहीं प्ले हो रही है तो रहने दीजिए. I'll just send it to these guys. नहीं हो रही है? YouTube पे है. उससे पहले आप वापस मुझे स्लाइड लगा दीजिए ताकि I don't miss out on the time. Please, thank you so much. ये हाँ जी. Thank you. Okay. So I'll share this video link with you. Please watch it for your own good. I'll share a lot of research. I love researching, so you can find it. Okay. Now this. If you want to note it down, please note it down. The crux है. ये HCD का crux है for you. Okay, you don't need to read anything. You don't need to read any article. बस ये कर लें, and that is going to be better for you. What happened? Okay. So the principles and features. Okay. In those principles, the first one is again to observe. Sorry. Okay. आप वीडियो प्ले करें? जी. Ignorant? नहीं. मैं खुद कर रही हूँ. आप ये वीडियो के साथ साथ प्ले हो रहा है actually. हाँ ये. Or probably it's copying my words. ये क्या है ये? What is that? Something happened to the screen actually. आप slides लगा दीजिए, ठीक है? And then we can see how. हाँ, simple. फिर हम experimentation थोड़ी देर बाद कर लेंगे with the video. Thank you. Okay. Okay. Yes. All right. Where were you? Over here. Okay. Yes, please. I'll stand here and I would rather that you guys look at it. Okay. I'm just going to pinpoint what is important. People. Duh, of course, you know. Human centered design, people. Okay. How much you care about people, that matters. Even if you don't, for your own startup, you may have to.
Okay? So go out, research, understand the fundamental issues, interact, and do observations. Acha, somebody is saying find and solve the problem. That's not the thing. It is find and solve the right problem. Okay? So you need to find out whether the problem you have is the right problem or not. Let me give you an example. One startup came to me. I'm also mentors to a lot of startups. So one startup came to me, they're like, we want to design SaaS solution. And there will be AI embedded in that. I was like, why? So they're like, it is going to be for HR. I was like, why? It is going to help them train. I was like, we already have Coursera. We already have so many other platforms, Google Garage and so many other. What is your SaaS solution going to do? It is going to be gamified. I was like, how? So are you getting me? एकदम से आके कुछ create करने नहीं बैठ जाए. Do a little research. Why do you want to do it? So the why is very important. UX isn't always the most important component. It is the end result. Okay. And last one. Please read last 3 points. We must understand the context of use. Startups fail because they miss out on the context. They miss out on the situations or on the use cases that can be there for their solution. And I just give you the this example of the cafe as well. Okay, last but not the least, Bill and Melinda Gates is a philanthropy non-profit organization. Then we have UNICEF, and then we have 𝐒𝐞𝐬𝐬𝐢𝐶𝐬. All of them helped out, took help from HCD in these 3 ways. It helped them clarify the assumptions, it helped them clarify or cut the waste, okay, and last but not the least, it helped them build partnerships. Very important, kahin pe likh lein. Nobody, you can't do it single-handedly. Even if you're 20 people in a team, you can't do it. You will not be able to scale. 1, if you don't have technology. 2, if you don't have the right ecosystem. So build partnerships from today. आज ही अगर आपको आइडिया से पता चलता है कि यार एक मिनट मेरा ये आइडिया है, आई थिंक इसमें ये बंदा जो है वो ये रोल प्ले करता है और ये इसको सर्व करता है इनडायरेक्टली, तो आई शुड पार्टनर विद दैट पर्सन एज वेल. So that's how it is built. You need to have the startup mindset with you, okay? All right. Let's do this exercise now. This is the last bit of the session, and this is going to help you plan your design thinking, workshops, and your own prototyping as well. So let's take it as much seriously as possible. I'll just give you instructions once. It's written over here. What is that? Let's make toast. That's all. So these are chart papers. These are markers. There is a tape. Whatever you make, you put it on the glass doors. But there is a catch. I will make how many? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Good. Can you do the math? Can you divide it in 3 groups or 4 groups? 4 groups हो सकते हैं? 4 3 से 12, right? अच्छा. 3 4 से 12. 3 3 के 4 groups बना लें, ठीक है? So how will you do it? 1 2 3 4. आपका 4th number है, ठीक है? 1 2 3 4. 1 2 3 4 1. 1 एक साथ हो जाएं, 2 एक साथ हो जाएं, 3 एक साथ हो जाएं, 4 एक साथ हो जाएं. Get up, get your chart papers, get your stick-ons, get your markers, okay, and start making a toast. Thank you. I don't know, whatever comes to your mind. But मुझे नीचे बैठे हुए नजर आए आप लोग, because I'm that harsh and inhuman. Okay, you take the chart papers, you take the markers, and some of you can also take stick-ons. How will you use them? I don't know. But your target is make toast. And yes, you can take help from me. And this activity is going to be timed right now. It is 1:45. So let's get back by 1:05. 1:05 पे activity खत्म हो जाएगी. So time starts now. Let's make toast.
$10,000 lease a computer. In next 5 minutes, your charts should be on the glass doors. Pick your spots yourself. Make it seem like an exhibition. You have 3 more minutes. It's very important to exhibit. If you can't show the solution that you have made, then there is no point of making it. And have you joined now? Okay.
You can stand with any of the groups. It's fine. Yeah, yeah. Feel at home. I can see good creative diagrams as well. Very nice. Have you given names to your groups? Good. Names are important. You can space there. You can place them on the glass doors there. Pick any of the door across this room and you can place your chart there. बाहर की पब्लिक को दिखाने कोई मसला नहीं है, वो भी दिखा सकते हैं. One minute. It's over here on the table. Time up. Pick a presenter as well. कोई एक present, one of you who is going to speak. If you all want to speak, perfect, but one of you will. Okay, are we done? Perfect. Okay, let's start. Which group do we have first? Which one wants to go first? Can I have a name? कोई नाम बताए किसी एक ग्रुप का? 4 toasts. Ah, 4 engineers? Nice. Okay. Okay, 4 toasts, you start. Tell me what have you made? What are these stick-ons? Explain करेंगे क्या बनाया आपने? I'll tell you what we are trying to do here. You want to take the mic? Okay. Yes, please, continue. Please applause. Perfect. Loved it. Now you don't know what I'm judging, by the way. You don't know what what is the final result. I agree with you. Thank you, Wahid, right? Wahab. So sorry, guys. Okay. I love this second recipe sort kind of chart. And somebody tried to make something as well with it anyway. Hey, okay, never mind. Please tell me. Yeah. Okay. Oh, okay. Very nice, okay. Loved it. Thank you so much. Yes, please. Oh, okay, okay. Never, yeah, it's good. There is no wrong answer, by the way, okay? We'll tell you a lot of things about these presentations, yes. Making the perfect dose, you need to select the right wheat. And then you have to process it and wait for it to like rise and all that. And then you have to bake it perfectly. Like it can be done in a toaster, it can be done in a pan, or it can be done in oven. How do you know so much? Because one of my businesses is a market. Is that? Thank you. See?
Okay, I'll tell you so many more things about your presenters. Thank you so much. Let's have the third one. Please, what's the name of the group? Toastify. Oh, nice. What's the name of your actual startup? Mapalytics. Nice. So a lot of wordplay. Yes, please. Toastify. Tell me. 3 steps. Nice. Okay. ठीक है. ठीक है. Oh my God. That's called a minimal solution. Okay, good. Last group, please. Butter Boys, Hamza. You're a fiction lover, I know. Yes, please. Do I put the butter first, or do I put the toast in the toaster first? Spread it evenly on both sides, a very thin layer, then put it in. Put it in the toaster. You did not put 1, 2, 3, so I don't know which one is first and which one is second. You did write it. Okay, perfect. Thank you so much, guys. On your seats. Thank you so much. Give a round of applause, guys. Amazing. And the success of your presentations depends on your team members, actually. So we had a person who had experience with Maki. See, such amazing insights we got. Now notice. I will make you notice things today, okay? 4 hosts are 4 engineers, right? The way in engineering, we divide things, okay? We divide them into smaller components, and then we make a whole out of that, right? Or we make a process. So that's how engineers work. You can clearly see that they've numbered their processes. So there are nodes and there are numbers, but there are no links. What are nodes? Nodes are objects, of course you all know. And links are the process, the thing that connects them, right? The connections. So there are numbers and there are nodes here, okay? In the second one, we don't see any number or we don't see any node. We see words. So can we call them you could say a process? Yes, we can, okay? A very early stage, but we can call it a process. But you see these hashes, okay? Then little attempts on making a drawing, and then these 2. Now think about it. Think about it. Imagine this is a product of yours. Imagine this is a product of yours. I just asked you to make a toast. I did not complicate it. But there are certain startups who try to do X factor, try to hit X factor. So that's what they did. They're like, no, we're not going to give you toast. We're going to give you French toast. And the other guy was like, oh, hold on. I'm going to tell you where is the best wheat coming from. So are you getting me? So did you ask the user? Well, the user just wanted a toast, right? I did not want complications. Now these people, it's like, you want toast? Here you go. 1, 2, 3. But let me tell you, in a good HCD process, human-centered design process, your nodes and your links, your connections, should not be less than 3 and should not be more than 13. That's the sweet spot. 5 to 13 nodes and connections should be there in your human-centered design process. Okay? So this is a reflection. Nodes, links, systems model. You can understand various points of view and the complexity of systems model by checking the number of nodes and links, for instance. Okay? This is what you've done. The last one. Now in the last one, again I wanted a toast. It was a simple solution for me. But again it's a little, how do I call it? Not user-friendly. Why? Because I got confused. Like what to do first. I have the machine, I have the manual with me, the brochure with me, but what do I do first? So you had to specify it for the user. But in a nutshell, I just wanted a toast. That is what your human is. So your solutions are not revolving around it. Yeah? This is how we address the wicked problems. Learn about your user, your human. It is your human, literally. Okay? Last but not the least, somebody said, somebody very renowned person from IDEO said about this whole process that think about everything as a system. Everything is interconnected. You know the theory of chaos, butterfly effect? It says
everything connects everything, or everything is everything. So that means, and quantum physics also says that if I think a thought right now, there is a vibration somewhere in the universe, right? So similarly, everything connects everything. Everything is a system. Everything has nodes and links. You need to make sure that it is as per the user. It is as per the human. That's all for today. Thank you so much. If you have any questions, please ask. We are going to build a lot more on the design thinking. That is the goal. That is the process that you need to pick on. Not just conceptually, but you need to practice. So I'm going to be coming up a lot of activities, less words, more activities, inshallah, in the next session. But that's it for today. I'm giving you some links as well. I don't know how they're going to reach you, but yes, before you do anything, the last one, The Journeyman by 𝐾𝐞𝐬𝐢𝐶𝐬, etc., etc. Read this book. If you are into automation, digital transformation, change, digital change, creating a solution using technology, read the book. And you'll find out the most important element of your success is not your process, is not your technology, is not your solution, it's your human. You're human within the team, and you're human as the customer. Thank you, that's all.